शत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्व नहीं सर बंद है। स्टॉक पल्सर है सर आपने? स्टॉक है। मॉडिफाई नहीं किया है ना, साइलेंसर बदली नहीं किया है ना, कंपनी का ओरिजिनल साइलेंसर है। ये गाड़ी को साइलेंसर लगा के मतलब ही नहीं है, छोटा गाड़ी है ना। ज्यादा रीचिंग वो देखो, ज्यादा साइलेंसर नहीं वो आवाज देखो, वो वाला ये छोटा गाड़ी है। इसका भी बचता है ना, वो लगाने वाले लगाते हैं सब। आज सिर दुखने लगता है। अभी इतना लंबा हाईवे पे जाएंगे, चालू किया है उसका साइलेंसर कंटिन्यू चालू रहेगा, सिर दुखता है। This guy picked a fight with 3 bikers at a gas station, but the karma he gets next will leave you speechless. सस्पेंड आ गए हैं। मैं न लेता लेटर। ऐसे न बोलते, मेहमान है। कमलेश, निकाल तो अपने दादा की दुनाली। जय आराम को तेरे बाप को सस्पेंड करेगो, मेरे लल्ला को फालतू में सस्पेंड करेगो। अम्मा फालतू में ना, अम्मा फालतू में मेरी बात। बीज वितरण वाली फाइल पे अभी तक साइन नहीं करा, 1 महीना हो गया। बीज किसानों में बटो ही नहीं, सारा का सारा गया विधायक को। तो मैं कैसे घोटाले वाली फाइल पे साइन कर दूं? विधायक जी पे उंगली उठा रहा है। विधायक जी पे सस्पेंशन लेटर लिख इसका, टाइप कर। घूसखोर, बीजों की काला बाजारी करे तू, किसानों को लूटे तेरो विधायक और सस्पेंड करेगो मोए। रामबीर जबान ना लड़ा, जबान न लगा सकते, चप्पल तो लगा सकते हो। चौहान पे पहली बार किसी ने चप्पल उठाई है? ले, दूसरी बार भी मांग रही। टाइप कर इसका सस्पेंशन लेटर अभी टाइप कर। गई अम्मा दफ्तर में, इतने बड़े अफसर पे चप्पल चला गई। सस्पेंड आ गए हैं। मैं न लेता लेटर। ऐसे न बोलते, मेहमान है। कमलेश, निकाल। सबसे बड़ा जो चेंज है, लेज वाले जो आलू बेचते हैं, अगर वो आलू आप लोग उगाने भी जाओगे ना तो आपके ऊपर केस कर देंगे। लेज कभी भी खुद के आलू नहीं उगाती, वो ना कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करवाती है कि उन्होंने एक किसान को खरीद लिया कि ये पर्टिकुलर आलू तो पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करेगा, और जितने भी टोटल आलू ये चिप्स बनाने के लिए उगाए जाएंगे, आप उसके अंदर से एक आलू भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि उन आलूओं की एक स्पेशल ब्रीड होती है जिसको लेज ने पेटेंट करवा रखा है। और हमारे गुजरात के अंदर 5-6 फार्मर्स ने सेम आलू उगाने शुरू कर दिए थे और लेज ने उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर दिया था। बट हमारी कोर्ट ने बोला कि भाई उगाने पे कैसा पेटेंट है, जब तक तुम्हारे चुरा के नहीं यूज कर रहे ना तब तक कोई केस नहीं बनता। लेज वाले जो आलू बेचते हैं, अगर वो आलू आप लोग उगाने भी जाओगे, ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, यू जस्ट वेस्टिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज मैन। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। सही बात कर रहे हो तुम। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर, कुछ नहीं होता है इनके पास। गरीब होता है इनका बाप, कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है तो कोई झाड़ू लगाता है। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को। Your engine. Either way, it was pretty quick, but those days are gone. And सोचा we've all seen it. Car rolls upon a dyno with 200 horsepower and a few freshly installed engine mods. Some guy with a laptop sits in there and presses a few buttons. Some cool noises, maybe some flames later.
Congratulations, you got 800 horsepower now. But how is that even possible? It's all in the tune, baby. So today I'm going to be talking about ECU tuning, what it is, how it's done, and why you should get your car tuned too. Alright, you know what? Let's go through the basics real quick. You probably already know how a combustion engine works. I mean, you clicked on this video, but put simply, to make power, you need three things: air, fuel, and spark. The combustion cycle starts with your piston at top dead center, or TDC for short. As the piston moves down, the intake valve opens and a mixture of fuel and air gets sucked into the cylinder. The piston moves back up again, compressing this mixture. The spark happens, igniting it. The gases inside the cylinder expand and push the piston back down. The piston moves back up again, pushing the gases out of the cylinder, and the cycle continues. Simple enough, right? Good. Now, to get the best performance and efficiency, you need the right mixture of air and fuel. This is called the air-fuel ratio, or AFR for short. Too little fuel, or what's commonly referred to as a lean mixture, your engine won't be making any power or overheat and cause a whole bunch of issues. Too much fuel, or a rich mixture, again, your engine's not going to make the maximum power and your fuel efficiency is going to suffer. So your air-fuel ratio needs to be just right, and your reference point is always going to be the stoichiometric ratio. Ha! Look at me! I say big words now. This is the amount of air you need to completely burn, let's say, 1 gram of fuel. And it's gonna be different for every kind of fuel. For example, to completely burn 1 gram of gasoline, you need 14.7 grams of air. That's an air-fuel ratio of 14.7 to 1, or just 14.7. But here's the thing, that's not where your engine makes the most power. At wide open throttle, that's too lean. Its happy place is actually around 12.5 or so. At idle, 12.5 is probably too rich. Your engine might have a smoother idle at around 14. And if you bolted on a turbo or something, you might want it way richer than 12 when your car's on boost, and much leaner when you're not in boost. So it's not just one AFR value, it's actually a big table of AFR values. This is usually called the fuel table or fuel map. Every cell is going to have an AFR value for a given engine speed and load. Let's say you're at 2000 RPM cruising down the highway, so low engine load, versus 2000 RPM going up a hill. You will have a different AFR value in each of those situations to get the maximum power and efficiency in both scenarios. Good. Now that we've covered air-fuel ratio, let's talk about spark. The timing of that spark, or what's called the ignition timing, is also very critical. If the spark happens too late, the piston might be too, but here's still degree with messers that use that kind of technology are just sitting in some boomer's garage. You and I aren't allowed to touch them, so don't even worry about them. Starting in the 80s and 90s, car manufacturers started to use something called the electronic control unit, or ECU for short. This is basically a computer that's coded to control pretty much everything. It receives signals from sensors and actuators all over your car and your engine. The code then reads those signals and compares the actual values with the target values on those tables and maps that I just talked about. So for example, if your mass airflow sensor or throttle position sensor is telling your ECU that you're at 40% engine load, and the crank position sensor is telling your ECU that your engine is at 3000 RPM, the ECU then looks up the AFR value for 40% engine load and 3000 RPM and compares it with the AFR value that's coming from your oxygen sensor in your exhaust system. It then makes the necessary adjustments to make sure your car is running the way it's supposed to. So if the AFR value coming from your oxygen sensor is 13, while the table says it's supposed to be 11.5, your ECU knows that your engine's running too lean, so it sends a signal to your fuel injectors to stay open longer to add more fuel. This feedback mechanism is pretty much how everything else is done too. Like if your engine starts to experience some engine knock or detonation, the ECU will receive a signal from your knock sensors. It then sends a signal to your ignition system to retard timing to protect your engine and stop engine knock. So to tune your ECU, the tuner needs to make changes to the code and the values on those lookup tables. And that's how they get to optimize things like air-fuel ratio and ignition timing across all engine speeds and loads. So let's
say you increase your airflow by adding a cold air intake. The tuner would then go in, add a bit more fuel to match the airflow, and that would give you more power. Now let's say you added a turbocharger. The tuner would make changes to the ignition timing so you don't blow your engine on the first pull, and adjust your AFR and boost pressure to make sure you're getting the most out of your turbo without destroying your engine. You can even tune it for E85 if you wanted to. You can unlock all the power and potential that engine has to offer. And honestly, in some cases, you can get more power out of your engine even without making any physical modifications, just with the tune. I'm serious, it's like free horsepower. हे fellas, Beast Boy here और स्वागत है आप लोगों का माइनक्राफ्ट के उस सुहाने दिन में जो जल्दी ही बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है। बिकॉज अभी हमारा नेदर का सफर खत्म नहीं हुआ, हम लोगों को नेदर और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने जाना है आज हमें, लेकिन वो जो नेदर में नए सांड लोगों ने जन्म लिया है उन लोगों को गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने सुना है। तो हम लोग गोल्ड आर्मर लेके जाने वाले हैं आज। पैर कहाँ गए मेरे पास बने बनाए पैर नहीं है, तो मेरे को बनाने पड़ेंगे। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है। यस, अपने पास गोल्ड